उसके बाद आप कर सकते हो। आप कब से फास्टिंग में 6 बजे से कोई बढ़िया है, इनको ब्लड टेस्ट कराओ फटाफट और रिजल्ट मिलाओ और नेक्स्ट कर सकते हैं इनका। जो सर सेटम बैंड हो रहा था तो उसको रोज सीधा सीधा जो ड्रिप निकालेंगे उसके अंदर कौन सी है वो सीधा अगर हो गया तो प्रेशर वाली प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्योंकि मुझे प्रोसेस उसी से प्रेशर फील होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये सेप्टोप्लास्टी सब तो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरी वही थी कि प्रेशर फील होता था। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ और अभी उसके अलावा यहाँ पे और फिर दोबारा से फिर यहाँ पे चिढ़ने लग गया क्योंकि हमने यहाँ से कट करी हुई हड्डी तो दूसरा कुछ लगा था पार्ट ये कार्डियल लगाया था हमने यहाँ पे तो जहाँ से कट किया है वो चुपचाप नहीं इस साइड तो सही करेंगे, अंदर से सर्जरी करना पड़ेगा, बिल्कुल मैक्सिमम चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन आप 10 दिन प्लान करो आफ्टर सर्जरी। तो फिर आज है डेट 5 अच्छी आज 7 हुई तो 16 17 तक रिटर्न टिकट मैंने 16 तक रखा है। देखते हैं अगर हो जाएगा तो आपको छोड़ 20 नंबर 20 ना कोई बात नहीं ठीक है 17 भी हो जाएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है सर 10 दिन में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ लगेगा 10 दिन कैसे ठीक हो जाएगा। जाने से पहले आपको फर्क पड़ेगा, देखने में तो है ही, फीलिंग में और सर क्या क्या हुआ है वो बताइए। सेप्टोप्लास्टी रिब हार्वेस्ट अंदर का जो प्रॉब्लम बाल का जो शेप है ये से होगा, थोड़ा कम होगा, हिप भी पड़ेगा ऊपर, ये बेसिकली हम जाएगी, थोड़ा सा कम होगा, ये सब मायनर है आपके लिए मेन काम हड्डी का है सब कुछ मेन तो इसीलिए रिब हार्वेस्ट करके 3 बार एनोप्लास्टी हो चुका है आपका ना, तो 2 बार मेरे एक बार एनोप्लास्टी तो सही है। ये जो ओपन है तो एक ही बार ओपन बना है ओपन ही होगा इस बार भी, हमने पहले एक बार ओपन हुआ है 3 बार ओपन नहीं हुआ है। हाँ 2 बार नहीं लेकिन एक बार आपका मेन प्रॉब्लम तो अंदर है, 2-3 बार को वहीं पे कर रखे ना लोग यहाँ पे इसके अंदर वहीं पे किया पहले भी और जो मेरा टीम पे बैठा है ना मतलब ये सेप्टोप्लास्टी के बाद ही बैठना शुरू हुआ जब फर्स्ट सेप्टोप्लास्टी उससे पहले नहीं बैठ रहा है, उससे पहले सिर्फ बैंड होता था तो सेप्टोप्लास्टी में मैंने क्या किया तब से बैठना स्टार्ट हुआ। मुझे ही गई आपने उसमें ठीक है आपके साथ कोई आया क्या आपकी है हाँ ठीक है तो फिर को बता दीजिए कि आपको 10 दिन का प्लान होगा और उनके पास जाइए जल्दी रेडी करिए ताकि आज ही हो जाए आपका आज हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। So yet another patient who's come to us for a rhinoplasty surgery and this patient is special because I would say rather challenging because this patient's already had 2 septoplasties, 1 rhinoplasty earlier. पहले कान से या रिब कार्टिलेज लिया था, कहाँ से लिया था? ईयर कार्टिलेज लिया था, कभी रिब नहीं लिया ना? रिब नहीं लिया। Okay. So this patient's constantly having right side breathing issues and inferior turbinate is hypertrophied. Also this patient, if you see on the side view, you can see the hump there. That is actually the bone which is not done well in the last surgery. The dorsum is not at all straight. He does have septal support, but this nose is very broad and the main issue is function than cosmetic, so it's going to be both cosmetic as well as functional rhinoplasty. He wants the breathing issue to be sorted out on the right side. Also, he wants cosmetic correction in terms of straightening of the dorsum, a proper tip, a sharp tip, and reduction of the alar base. So these are the 3 main things we are going to correct cosmetically. We are going to harvest a large chunk of rib for him as he would be requiring tip graft, septal extension, dorsal graft and marginal rim grafts. So this surgery is going to be quite challenging, would take us about 3 hours and आप हमारे साथ आज ICU में ही रहेंगे, ठीक है, सर्जरी के बाद और बाकी सर्जरी के बाद कुछ घंटे तक खाना नहीं है, उसके बाद आप राइनोप्लास्टी किया, मुंह के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे तो खाने पीने में कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है क्या नहीं करना क्या करना वो सब मैं सर्जरी के बाद बताऊंगी, ओके ठीक है। ओके अभी हम आपको शिफ्ट करेंगे थोड़ी देर। ठीक है। हाँ
You can see major issues. He's got a bump, he has breathing issues, the nose is not projected well. I'm going to show you the scars, the asymmetry, the big. Was quite complicated. Taken the rib graft, we've used a septal extension graft, septal reconstruction first up, and then tip work. We're going to show you how he looked before we started. If we start with the side view, so you can see the scarring that he's had on the dorsum, also after one of the surgeries, and then there's a depression in the bone. There's a bend. So here we have another rhinoplasty case. Is Mr. Balveer Singh from Uttarakhand. Today is his 4th post-operative day. As you can see, he has his nasal splint intact, as well as the pack is. We have removed the pack. So we just ask him how is the pain? Pain is reduced. आपका pain कैसा है? कम है. Okay. हाँ. So we had harvested the rib for his nasal augmentation. इधर आपको पेन है? पेन नहीं है. फर्स्ट दिन हुआ था. So okay. So the pain is reducing, right, from the first post-operative day. So what you are eating? क्या खा रहे हैं अभी तो नॉर्मली so कुछ भी खा सकते हो. चपाती, राइस, इडली वड़ा. ओके. सो आपका स्वेलिंग भी इधर का कम हो रहा है ना? थोड़ा कम हो गया. हाँ, पहले से ही कम हो रहा है. ठीक है. ओके, थैंक यू. 5th day, no? 5th day post surgery. Okay, swelling has reduced. Okay, but there is slight discoloration. Ecchymosis we call it. It is normal. It is also reducing day by day. So look up. You have cold? No. Okay. Cool. So any bleeding, any complaints you have? Bleeding is coming. Okay. ठीक है. Okay. Just hydrate yourself well. Drink lot of water. Okay. Keep drinking lot of water. Okay. सेप्टोप्लास्टी भी पूरा अंदर क्या डैमेज करके रखे हैं. ठीक है. पहला भी नोज पूरा ब्रीदिंग नॉर्मल होने के लिए आपको लग जाएगा 2-3 महीना, बिकॉज अंदर काफ़ी स्टिचेस लगाए मैंने आपको. आप ऐसे देखिए, नीचे देखिए थोड़ा प्लीज़. जरा सा दर्द होगा जब मैं आपको ये निकालूंगा. हो गया. So this is a quaternary rhinoplasty, as you heard from him, which means he's had 2 septoplasties, 1 rhinoplasties done previously elsewhere. He still has major issues with his nose, and we've tried to address all of this. Now I'm going to show you his. So you can see that nose now. But before we do that, something very interesting I'm going to show you with his nose before. Now, if you look at that nose before, he had a bump there and a dump, a total depression. There was a bony spicule that was poking outside. It was also sticking inside. So that was all from the earlier surgeries. And look at that side view, just a flat nose, no tip support whatsoever, and issues with the dorsum too. आप देखिए अभी. And now we're going to let him have a look at his nose after the surgery here. This is day 8. सूजन है, पर जब सब कुछ सही हो जाएगा पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, नेचुरल लगेगा. ठीक है. अभी से अच्छा लगेगा, ऑलरेडी अच्छा है.
क्यों मैं बोल रहा हूँ सूजन है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कुछ हड्डी का काम हुआ है आपके इस पे। पहले आपको याद था हड्डी मतलब महसूस होता था, ये जो है यहाँ पे हड्डी था बहुत सीवियर, और उसके बाद डिप्रेशन था, हड्डी नहीं था। तो जहाँ पे डिप्रेशन था वहाँ पे रिप हार्वेस्ट और कार्टिलेज लगाए, और जो साइड में देखो, अभी ऊपर भी देखिए कितना फ़र्क है, साइड भी ऐसा देखिए एक बार, ये दूसरा साइड है और एक फ्रंट व्यू है। ये भी अंदर जाएगा ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे हमने स्प्लिंट लगाया इतना, तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सूजन है, ये आपको अंदर जाएगा, ठीक है ना, अंदर जाएगा, आएगा 3-4 मिलीमीटर अंदर जाएगा वहाँ पे। अब आपके पूरे स्टिचेस निकाले जाएंगे। और आपको दर्द हो रहा है रिब में कहीं? नहीं, दर्द कुछ नहीं है, वेरी गुड। हम आपको एक नेज़ल ड्रॉप देंगे, 5 डेज मेडिसिन मिलेगा, 2 महीना एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, फिक्स्ड रिजिड, और हमारे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कीजिए, और नेज़ल ड्रॉप्स मिलेगा, और आपकी नेज़ल स्वेलिंग के लिए टैबलेट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे सही होगा, जल्दीबाजी मत करो, आप 6 मंथ पकड़ के चलो। एक सर्जरी के बाद जब सर्जरी वहीं पे करते हैं ना, तो हीलिंग के लिए थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये आपको समझना है। काफ़ी टाइम बहुत बार हो गया है, तो इसीलिए अच्छा हो गया, ये लास्ट होगा आपका, इसके बाद काफ़ी अच्छा होता है। हाँ